Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. And today, basically, we are going to cover the last concept in the matrices, that is identity matrix. बहुत easy सा है. Okay. Identity matrix. Okay. Here, basically, identity matrix is represented by I, and इसका जो आपके पास matrices होता है वो ये होता है 1 0 and 0 1. Okay. We call this type of matrices as a identity matrix. Okay. Just remember one thing, if you times 0 with any number, it will give you what? 0. And if you times 1 with any number, it will give you basically that number that is multiplied by 1, which is 3. So it will give you the 3 here. Okay, so look, 0 and 3. Now, whenever you are times any matrix with identity matrix, you will get the same matrix that you are multiplied with identity. Like अगर मैं A, B, C and D कर दूं और मैं इनको multiply करा रहा हूँ identity matrix से, so I will get the same bracket that is written here, A, B, C and D. Okay, अगर आपको ये आया कैसे आया इसको हम लोग टेक्निकली सॉल्व भी कर लेते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए आपने देखा है इसका 2/2 और इसका भी 2/2 है. तो लुक, हमने चेक किया मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. आप मल्टीप्लाई करा दें, यू नो कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगी. ओके, 1 टाइम A प्लस 0 टाइम C. अगेन 1 टाइम B 1 टाइम B and 0 टाइम B, 0 टाइम D. Again 0 टाइम A 1 टाइम C, 0 times B and 1 time D. Okay, now 1 time A is A, 0 times 0 times C is 0. 0 time A is 0, 1 time C is C. 1 time B is B plus 0 time D is 0. 0 time B is 0, 1 time D is D. So look, at the end you are getting what? A, B, C and D. So look here. So you are getting the same. It means any matrix multiplied with identity, it will give you the same bracket that is multiplied with identity. Like A is times with identity, so it will give you A, and I is times with B, it will give you the same B matrix. Okay, like अगर मैं आपको इधर एक और एग्जांपल बताऊं, तो आपको आंसर डायरेक्टली आप लिख लेंगे 3401. यू डोंट नीड टू राइट दी वर्किंग एज वेल. ठीक है, इस तरीके से. तो ये आपके पास यहाँ पे जो सिनेरियो आ गया. अच्छा, एक और है. अगर मैं A को उसी के इनवर्स के साथ टाइम्स करवा दूं, इट विल गिव यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके,
ठीक है। अगर मैं ए को उसी के लाइक अगर मैं यूं लिखे दूं आपको, लाइक ए आई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो क्या होगा, आई को फाइंड करने के लिए पहले लिखा हुआ है तो ए इनवर्स एंड ए, तो ए इनवर्स एंड ए मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज द लास्ट सिनेरियो दैट वी हैव कवर्ड। बहुत बेसिक सा था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, तो जस्ट हमने इसको अभी कवर कर लिया है। और फिर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और हम लोग इसको उसी एक लेक्चर के अंदर इसको एंड कर देंगे इंशाल्लाह, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।